Hey guys, welcome once again to 7 Souls Education. This is Daily Quiz 10 Questions that Matter. चलिए शुरू करते हैं. The area known as West Bank sometimes appears in the news in the context of events related to China-Pakistan Economic Corridor, occupation of the region by the ISIS, issue of Israeli settlement, Chinese aggression in the South China Sea. आंसर इज सी, इशू ऑफ इजरायली सेटलमेंट. नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. लीगल केस, सब्जेक्ट मैटर. एक तरफ है लीगल केस, दूसरी तरफ है सब्जेक्ट मैटर. विच ऑफ द पेयर्स ऑफ द गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड. इसमें हमें बताना है कि करेक्टली मैच्ड कौन सा है. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सब्जेक्ट मैटर अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. लीगल केस था कोयलो केस. इम्यूनिटी ऑफ 9th शेड्यूल आइटम्स टू जुडिशियल रिव्यू. सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 19(2) अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी. कौन से इसमें करेक्टली मैच्ड है बताना है. आंसर इज 1 and 2 आर करेक्टली मैच्ड, थर्ड वन इज इनकरेक्ट. Present battle lines between the judiciary and the executive were drawn in October 2015. अक्टूबर 2015 में एक जजमेंट आया था, वर्डिक्ट आया था, जिसे डिलीवर किया था सुप्रीम कोर्ट ने. ये केस था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में. और इसमें क्या किया, कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब कि हटा दिया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को. और इससे क्या हुआ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC उसको रिप्लेस किया था कोलोजियम सिस्टम को. तो कोलोजियम सिस्टम वापस से अब आ गया है. कोलोजियम सिस्टम के थ्रू ही अब रिक्रूटमेंट होगा, ना कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के थ्रू. थर्ड क्वेश्चन. चिलाई कालन इज. चिलाई कालन क्या है. अ वायलेंट डस्ट स्टॉर्म विच ब्लोज ड्यूरिंग विंटर इन थार, अ 40-day harsh winter period in Kashmir, a peculiar weather phenomena observed annually in Tripura when hailstones, rain and snow falls at the same time. A cold wind rushing down from eastern Himalayas in violent gusts between 60 and 100 kilometers per hour. Answer is B. A 40-day harsh winter period in Kashmir. चिलाई कालन होता है is the period of winter when chances of snowfall are usually most frequent and maximum. चिलाई चिल से समझ सकते हैं, बी चिल्ड है, तो चिलाई कालन. In the world of finance and business, a unicorn refers to. यूनिकॉर्न किसे बोला जाता है फाइनेंस में. A startup with a stock market valuation of more than $1 billion. An environment-friendly startup with a stock market valuation of more than $100 million. An investor who sells his stock in a startup the moment its value begins to plummet. A startup firm which specializes in keeping a lookout for takeovers. तो इसका आंसर है A. A startup with a stock market valuation of more than $1 billion. जिस स्टार्टअप का स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो उसे यूनिकॉर्न बोला जाता है. यूनिकॉर्न जो है एक वाइट हॉर्स होता है ना, जिसका शायद सर ह्यूमन बीइंग का होता है और शरीर जो है हॉर्स का होता है, विच इज़ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजनरी है. वैसे ही एक स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाए मार्केट वैल्यूएशन, तो ये बहुत ही रेयर है ऐसा फाइंड आउट करना, इसलिए उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है. ऐसा स्टार्टअप जिसका $1 बिलियन से ज़्यादा मार्केट वैल्यूएशन हो. ठीक है, इस टर्म को पॉपुलराइज किया था आइलिन ली ने. ठीक है, दोज दैट डू रीच $1 बिलियन मार्क आर सो रेयर दैट फाइंडिंग वन इज एज डिफिकल्ट एज फाइंडिंग अ यूनिकॉर्न. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. विथ रेफरेंस टू द वैलिडिटी ऑफ लेवी ऑफ टैक्स ऑन द एंट्री ऑफ गुड्स इन टू लोकल areas in states by respective state governments, consider the following statement. The levy of such tax is valid only if income accrued is utilized by states for the services such as provision of weighing scales on highways or for maintenance of state highways.
The Supreme Court recently struck down the constitutional validity of any such tax. Which of the following statement are correct? कौन से इसमें से correct है? One only, two only, both, neither. Answer is neither one nor two. Both are incorrect. Validity of levy of entry of tax. देखते हैं क्या है. Is valid. However, such levy should not discriminate between goods imported from other states and the ones locally. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. दूसरा, कंपेंसेटरी टैक्स क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स प्रीवियस डिसीजन ऑन लेवी ऑफ एंट्री टैक्स. इन पास्ट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एंट्री टैक्स levied on goods should be for the purpose of compensating the tax for the services provided by. Examples of such services provided may be provisions of weighing scales on highway. The court in this judgment held that levy of entry tax need not be just for compensatory purposes. Sixth question देखते हैं. With reference to the draft bill to ban unregulated deposit scheme, which of the following statement is or are correct? An unregulated scheme is one that is not registered with any regulatory body such as SEBI or RBI. States are responsible for appointment of competent authority to investigate matters related to an unregulated scheme within their borders. Select the correct answer using the code given below. What is the answer? Answer is both are correct. Unregulated deposit scheme का मतलब होता है a scheme or arrangement under which deposits are accepted or solicited by any deposit taker by way of deposits taking business and which is not a regulated deposit scheme. The state government shall appoint competent authority for this act, who shall have the power to summon or cause to be conducted an inquiry, investigation or survey in respect of any person, place, property, assets, documents, books of account or any other relevant matter, and shall have such powers as may be necessary for carrying out the purpose of this act. Where investigations involves multiple states, the case may be referred to CBI. Seventh question, the two-state solution sometimes in the news is associated with which of the following pairs of countries? Two-state solution किससे related है? Israel, Palestine, China and Taiwan, Pakistan and Balochistan, जर्मनी एंड बेल्जियम. आंसर बहुत ही सिंपल है इसका, इजराइल एंड पैलेस्टाइन. एट्थ क्वेश्चन देखते हैं. अ न्यू डिजिटल पेमेंट ऐप कॉल्ड भीम was launched. In this context, consider the following statement. Users can send money to the people who don't have the app. The app is based on United Payment Interface. It will support Aadhaar based payment. Which of the above statement are correct? Answer is 1 and 3 are correct. Second is wrong because this app is based on Unified Payment Interface, not United. Okay. भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम का फुल फॉर्म है. ये एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ऐप है बेस्ड ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फ्रॉम NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. If you have signed up for UPI based payment on your respective bank account, which is also linked to your mobile number, then you will be able to use BHIM app to conduct digital transaction. BHIM is also supposed to support Aadhaar based payment भी हो सकता है. इससे सिर्फ आपको फिंगरप्रिंट यूज़ करना है और उससे आपका पेमेंट हो जाएगा. BHIM ऐप इज़ नॉट अ मोबाइल वैलेट. ये एक मोबाइल वैलेट नहीं है जैसे कि पेटीएम और मोबीक्विक वगैरह है, उस टाइप का ये नहीं है. Your friend, relative or even merchant who you are trying to pay does not necessarily need to be on BHIM app. यदि कोई BHIM app पे नहीं है तभी भी आप उनको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू BHIM app. All they need is a bank account. उनको बस एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत है. जिसको आप पैसा भेज रहे हैं उसका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए. BHIM also has option to transfer via IFSC, MMID as well as non-UPI bank. आप लोग मुझे MMID का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ टास्क. सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ये टास्क हैं जो कि क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव आर फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया.
Superintendence, direction, conduct of free and fair election, preparation of electoral rolls for all election to the parliament, state legislature and the office of president and the vice president, giving recognition to political parties, allotting election symbols to political parties and individuals contesting the election, proclamation of final verdict in the case of election disputes. कौन से इसमें से सही है? Answer is 1, 2 and 3 are correct. Fourth one is incorrect. यदि dispute हुआ इलेक्शन में तो फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आता है, ना कि इलेक्शन कमीशन. Symbol is not property to be divided between co-owners. The allotment of symbol to a candidate set up by a political party is legal right, and in case of split, the commission has been authorized to determine which of the rival groups or section is party entitled to the symbol. The commission, in resolving this dispute, does not decide as to which group represents the party, but which group is that party. A 3-judge Supreme Court bench clarified the purpose of paragraph 15 while upholding the constitutionality of the test of majority in Sadiq Ali versus Election Commission of India. This 1972 verdict dealt with split in the Indian National Congress following differences over the choice of Congress nominee for the office of President of India. The EC had to use the test of majority to determine which of the two groups was the recognized political party known as the Indian National Congress for the purpose of election symbols order. The Supreme Court has time and again upheld the test of majority in the symbols order to be a valuable and relevant test to decide a dispute between rival groups within a democratic organization like a recognized political party. But on the flip side, the entire process may take considerable time. 10th and the last question. The phrase neo middle class sometimes in the news refers to neo middle class किसके लिए यूज होता है? A class which is the product of post liberalization era. Those who have risen from category of poor but are yet to stabilize in the middle class. Young startup entrepreneurs belonging to scheduled caste. Answer is all of them are correct. A, B and C, all of them are correct. वो लोग जो पुअर कैटेगरी से उठकर मिडिल क्लास में आने हैं पर कम्प्लीटली नहीं आए हैं, उन्हें भी न्यू मिडिल क्लास. न्यू का मतलब होता है न्यू, और एक अ क्लास विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ पोस्ट लिबरेशन. सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. जय हिंद.